Hello, assalamu alaikum, and a very good evening to all of you. Thank you very much for joining in. Let me open up the questions window to see if you can all hear me. Okay, Hafiz Tanveer Iqbal said that he cannot hear me. All others, I'm sure, can. Mubin Akhtar, thank you very much for waving. Okay, all right, so that means you can hear me. Great, excellent, excellent. Okay, so did you people face any difficulty in joining the session today? Yes or no? I mean, there was a re-registration process. I had informed people in the group. I had sent out an email as well. Fantastic. Excellent. So all of you have become, I mean, if you've noticed, all of you have become GoToWebinar expert easily. Yeah. WhatsApp group, I agree, has done fantastically well. So बहुत मजे की वहाँ पर मैं conversations देख रहा हूँ. चलेंगे, fantastic. अब मैं आपको I'll just brief you a little bit about what's our plan for the future sessions. मैंने थोड़ा सा जो भी email circulate की है, उसमें भी I have indicated it. But for your information, once again, if you have not seen that email, so this week. Today's session is going to be our final session around the ethics and professional skills module, and I'm sure आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने professional skills module में से professional skills के ऊपर कोई discussion already कर ली हुई है and we are continuing now. जो आपका second session होगा अगर हसन उसको utilize करना चाहते हैं Thursday वाले को तो that will be available. Otherwise इस second session में हम एक बहुत interesting case study an international case study उसको हम explore करेंगे. So I did the same case study with the group of members yesterday. हम एक बिल्कुल different तरीके से session run करेंगे. So I just wanted you to be aware of that and be prepared for it. From the coming week, we are going to talk about taxation, and at least for 2 weeks straight. We are going to talk about taxation in detail. So, हम tax पे क्या-क्या cover करेंगे? Number one, income tax returns, sales tax returns, withholding tax returns. ये सारा returns से related. फिर हम एक session run करेंगे on updates on the recent changes in Finance Act. उसको देखेंगे. जो अभी final budget approve हुआ है, उसको देखेंगे. और इसके बाद finally हम लोग मूव करेंगे important clauses of the Finance Act. So हम अच्छी डिटेल में in some reasonably good detail we will be covering taxation. ठीक है, इसमें जो आप लोगों के sessions unmoderated होंगे, they will also play a very important part because taxation, just hearing other people explaining tax to you may sound very simple and easy, but when you have to apply it, and you'll have to look at scenarios, situations, you know, I would even want to go and discuss to the extent appeal preparation कैसे करनी होती है अगर आपको कोई you know कोई negotiation करनी पड़ रही है या आपकी you know आपकी tax complicated है tax return उसके लिए कैसे prepare करना है. All these are very, very relevant things. Just listening to a trainer or a presenter explaining things to you may sound very easy, but in fact in reality it is not. So ये sessions होंगे जी 2 weeks तक हम straight away like I said taxation पे बात कर रहे होंगे. Okay, और हम देखेंगे कि 2 weeks के बाद भी अगर taxation की हमें मजीद need feel हुई तो हम उसको stress करेंगे, उसको carefully इसको you know pull along करेंगे. So इसमें आप लोगों की like I said important attendance और आप लोगों की attention बहुत important है. इसके बाद 2 sessions run होंगे financial modeling पे. Once again, very, very important. Remember, this is not going to be a training in Microsoft Excel. This is going to be a training in how to create a financial model. और हमारी जो trainer हैं जिनके बारे में मैं आपको announce भी कर चुका था पहले भी, she was a participant of the last year's 6 digits program, and इस दफा वो ना सिर्फ MNP के elections जीत गई हैं
She has scored the highest number of votes that were given to any contesting candidate. And I think that's an example that she has set, a bar that she has set for all other succeeded participants, a bar that she has set very high. So ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर हम 2 सेशंस रन करेंगे एंड देन वंस अगेन बैक टू मी व्हेन आई विल टेक यू थ्रू सम अदर इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और इसमें जो हम पहली केस स्टडी करेंगे वो लम्स की है लम्स के जो केस स्टडी पोर्टल है उस पर पड़ी हुई है हमारे पास उसको एक्सप्लोर करेंगे हम अच्छी तरह और इसके अलावा स्टैनफोर्ड और क्रैनफील्ड ये इन यूनिवर्सिटीज की भी केस स्टडी रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो कि हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी दौरान आप लोगों की ट्रेनिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी हो रही होगी ऑन हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इन अ टीम फॉर टीम वर्क, ये भी हो रहा होगा। आप लोग प्रेजेंटेशंस भी बना रहे होंगे, आप लोग प्रेजेंटेशंस डिलीवर भी कर रहे होंगे। मैं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी चेक कर रहा हूँ। जो हमारा कन्वर्सेशन मीडियम है जो कि अभी तक हमने इंग्लिश रखा हुआ है वो थोड़ा सा विल शिफ्ट टू प्रॉपर इंग्लिश एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर मेकिंग प्रेजेंटेशन, फ्लुएंसी इन द प्रेजेंटेशन जो सजीद ने अभी तक डिस्कस किया है, आइडियाज को समराइज करना, पुट टुगेदर करना, उनको फॉर्मुलेट करना, क्वेश्चन आस्किंग टेक्निक्स, ये सब की सब यूज हो रही होंगी। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है जी। सो हमारी इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग फेजेस इसके बाद आने वाली हैं। I think with that I will hand over to Hassan and Hassan will take you through the rest of the ethics and professional skills module. So Hassan, over to you. Thank you very much, Harun Saab. Assalamu alaikum everyone and a very good evening. Before I begin, a quick sound check. Can you guys hear me loud and clear? And you can see my screen as well? All right, thank you. Thank you for the heads up. Thank you. Thank you. Everybody else, there are 50 almost people on the call. 50 people on the call. Loud and clear. One individual is unable to see the screen. Can you please refresh, Muhammad Safir? Yes, thank you. Thank you. All right, that's great. So almost everyone is able to listen to me loud and clear and see the screen as well. So let's begin without any further ado. And I would like to put a question at the very start of our conversation. What did we do or what did we discuss last week on the previous session? So if anybody from you can give me quick answers to this, as there was a movie, What Did You Do Last Summer? So I'm rephrasing the question. What did we discuss on the last session? Wajiha, you cannot see the screen. If I would urge you to refresh because everybody else can. And I also have a clear view from here. Yes, thank you, Muhammad Rafe. Ethical dilemmas and how to deal with them. Thank you very much. What else? Other people, please join Muhammad Rafe and give me an idea how good you are at your memory. No issues, Faik, if you were not able to attend the previous session. There were others, Sumera, ethical dilemma. This is the same that Muhammad Rafe has just talked about. Anything else that you can think of, recall? We learned what is personality and character ethics. Thank you very much, Reeb. Spot on. Yes, we did. Type of intelligences in the workplace. Thank you, Muhammad Rafe. Others, please also respond. Before I pick any one of you to share with me, what did we really talk about? Daniel, future of accountancy. Yes, that's perfectly fine. Saqib, yes, employability and workplace effectiveness to stand out. All right, what else? Okay, let me pick few people. Nimra Chaudhary, if you can hear me and you were there,
Please type yes if you are listening to me at the moment and you were there in the last session. All right. That's nice. Mutahed, if you could unmute Nimra and let us hear from her first that what did we talk about in the last session? Imra, please unmute yourself. You can unmute. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Can you hear me? Yes, you are loud and clear. ओके सर, हमने बात की थी एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल की। उसमें ना हमने बात की थी दो चीजें होती हैं, एक वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी। जो वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस है वो हमारे लिए इस्तेमाल होती है प्रोग्रेशन के लिए, और एम्प्लॉयबिलिटी में हमारी चीजें आती हैं जिस तरह सेट ऑफ स्किल्स हो गई, नॉलेज, अचीवमेंट्स, क्वालिफिकेशन। स्किल्स में हमारी जिस तरह कम्युनिकेशन, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, हमारा टीम वर्क हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें। और हमने बिल्कुल बात ठीक। की थी कि हमारा जो माइंड है वो, उसमें कोई भी ना लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये दिस इज पावर ऑफ माइंड होता है कि हम कुछ भी इमेजिन करते हैं तो वो हम अपनी आंखों के सामने जो है ना उसको पा लेते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि ट्रस्टवर्दी, यस, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जितना आप ट्रस्टवर्दी होंगे लोग आपसे उतनी ही हेल्प मांगेंगे। फिर उसके बाद बात हुई थी कि पर्सनालिटी एथिक्स होना चाहिए। तो ये जो है ये हमारे लिए इम्प्रूव करता है सोशल इमेज को, और इट कुड पोसेस सर्टेन गुड वैल्यूज थ्रू बिहेवियर्स, वर्ड्स, एक्सेट्रा। और हमारी बात हुई थी पैराडाइम की। तो पैराडाइम जो है उसमें तीन चीजें आती हैं, बल्कि दो चीजें आती हैं, एक हमारा माइंडसेट और हमारी वैल्यूज व्हिच ड्राइव्स बिहेवियर। एंड उसमें फिर आपने एग्जांपल दी थी कि एक राइटर थे और वो बच्चे जो है सुबह सुबह 8 o'clock बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, तो फादर उनके सामने बैठे हुए थे। I remember. Thank you so much. You have a great memory. आपने तकरीबन तमाम चीजें बताई हैं। अब मैं एक और पार्टिसिपेंट को पिक करना चाहूंगा। So if we can really unmute Danial Ahmed. Mutahid, if you could unmute Danial Ahmed and let's hear from Danial what he has in his memory. Daniel, you are on a self mute. You can unmute yourself. Thank you very much, sir. Can you hear me? Yes, you are loud and clear. Please proceed. Yes, sir. We talk about the last session, our future of accountancy. Like some of the right now the technologies used now will be changed, and new technologies will be adopted in the accountancy. Like in auditing, computer audit assisting techniques will be used instead of classical vouching. Similarly, bookkeeping will be ended, and softwares are used for bookkeeping, and other ERP. Yes, other ERP that's correct. Will be used for accounting techniques. All right. So let's give Muhammad Saqib Fatani a chance as well. Mutahid, if you could unmute Muhammad Saqib, let's hear quickly what he recalls of the previous session, in addition to what has already been shared by Danial and Nimra. Hi, Mohammed Saqib. You can unmute yourself. Please unmute. Yes, Muhammad Saqib, if you could unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello. जी, साकिब. लास्ट दो सेशन में कल से लेकर आज तक अटेंड किए, क्योंकि मैं ड्यू टू प्रिपरेशन में अटेंड नहीं कर पाया था, और मैंने बहुत कुछ मतलब ऐसी कन्वर्सेशन मैंने
एक्सपेक्ट भी नहीं की थी 6 डिजिट प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन इट वाज वंडरफुल। अच्छा, तो प्रोग्राम के वाले से ही मैंने जो चीज़ें लिखी भी अभी, पर्सनल एथिक्स, पर्सनालिटी एथिक्स और कैरेक्टरिस्टिक एथिक्स। तो इसके हवाले से जो आपने डिफ्रेंसिएशन बताई, जो कि मतलब ऐसी बातें मैंने सुनी जो मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू मतलब पूरी लाइफ मतलब मेरे साथ रहेंगी, और ये एडवाइसेस और न सिर्फ साथ ही रहेंगी बल्कि मुझे इन पर फ़र्क जानकर मुझे उनको वर्कआउट करने में भी मदद मिलेगी, कि मुझे उनको किस तरह से सेंस रिफ्लेक्शन की बात जिस तरह आपने की कि मुझे उसको रिफ्लेक्ट भी करना होगा अपने काम में। तो ये बातें समराइज मैं इसी तरह करना चाहूँगा, ये बाकी बातें कर दी हैं सबने। बिल्कुल ठीक है। थैंक हेलो, यू वेरी मच साकिब फॉर थैंक योर यू। फीडबैक। So let's listen from Murtaza. If you could unmute Murtaza. Hello, sir. Ji Murtaza, how are you? I'm fine. I didn't attend wholly the class, full class. All right. So what else you remember from the conversation previous to that? Uh, well, nothing new other than what the other people have discussed. Shared. All right. Thank you very much. Okay. All right. All right. Thank you very much. Let's unmute another participant and then we move forward. Arshia Yusuf. If we could unmute Arshia Yusuf. Walaikum Assalam. Ji Arshia. Like सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो I would like to explain something about personality, character, personality ethics and character ethics. So what you told us in the last session was your character ethics is your inner self, and your personality ethics is just what you reflect from your inner character. तो आप अपना जो पर्सनैलिटी एथिक्स है उसको मेक ओवर तो कर सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो इनर सेल्फ है वो तो रिवील हो जाएगा, which is your character ethics. So basically you need to work on your character. It will definitely reflect in your like personality as well. Very spot on. Thank you very much for all these recollections, and they are spot on. You guys have a good memory. That is a good thing. All right. How many of you, if you could type yes or no, how many of you have completed your task and have shared the outcome with the organizers of this session? So the story that you were supposed to write in 300 words. So Abdur Rahim has not done it. All right. What else? Arshia has also not done it. Anybody else? All those who said yes that they faced ethical dilemma. Particularly, I'm talking about those individuals. 50% of the people mentioned that they once faced an ethical dilemma in their lives. Well, definitely, Muhammad Rafe, every task that is given to you on these sessions is a must. There is no flexibility in that. That is why we actually give the tasks. Okay, you didn't face any ethical dilemma. You was unable to write it. All right. What about the others? Anyone who has done it? Any guess? Or otherwise, I'll consider that all of you have not done it. All right. So none of you completed the task, which okay, Rizwan, Mutahid will tell you how to share it if you have done it. Sumera is unable to write. Okay. Is this because you don't know how to write, or is this because you don't want to write on this ethical dilemma?
Anyways, we will check later on. Anybody else on the call who have completed their task of writing a story? All right, so I will share with you an example that I heard from a lecturer, and I was attending an online course of Stanford University. He said, every semester when I welcome a new batch of students, I tell them that by the fourth semester, you guys are supposed to meet 50 top C-level people from the corporate sector in your area. And every time by the fourth semester ends, what I come to know and what I observe is that only 20% of the people hardly go and meet and complete this task, and rest of the 80% they don't really bother to go for that task. And what happens afterwards is that he says the growth which I have been experiencing among the people who always do such tasks, is quite different than the ones who always remain unable to take up such tasks and do them. So this is always up to the individual, how much he or she wants to take, absorb, reflect, and prepare for. We definitely can never force you to do something. This is not a classroom where you are a student and we are teachers and we are going to deduct your marks. However, still, it is very important that whatever task is being given to you, that has an importance in its own self, and it is not without any particular purpose that we do such things. Therefore, it would be advisable that you do follow the instructions, because that is the first step to learn. If you are unable to follow the instructions, if you are unable to uh, act on those instructions, then obviously it is not going to help anyone. Merely listening to somebody is half of the story, but then applying what they have suggested you is another side of the story. Murtaza says, I think many of us don't know what ethical dilemma is really. So this question must have been raised in the last conversation, because when you were offered a poll in this regard, that was the time to raise this question, that you don't know what an ethical dilemma is. And if I would have answered it right away, but nonetheless we have to move forward, and then we have to take a namaz break as well in 5 minutes. So let me quickly share with you what an ethical dilemma is. An ethical dilemma means when a person is faced with two choices, when a person is at the crossroads, professionally, personally, and he or she has to take one choice as a decision. And while taking that decision, there is an ethical issue that comes to their way. So, for example, somebody asks you to share a confidential information, which you are not obliged and which you are not obligated to share. However, they presses you, or somehow they try to exploit you in a way that you are even unable to turn their request down as well. Now, on one side, there is a principle of confidentiality which restricts a professional accountant from sharing confidential information to any third party who is not legally entitled to such information. But on the other side, there is a pressure because that individual happens to be your line manager, that individual happens to be a senior head or director in the organization, that person can be a personal contact outside of that organization, who you know very closely, who is a very close relationship, and who is trying to emotionally leverage you by asking to divulge that information. Now this is a situation which we call an ethical dilemma, a situation, a crossroad where you have to choose between two options and you have to apply ethical principle, and in so doing, you often have to compromise your emotional side, you often have to compromise and let go of the pressure that you probably are experiencing because of that individual who is impressing upon you that you need to share this information, otherwise he will make you face certain consequences.
So these are the situations which are usually called an ethical dilemma. Anyways, move forward, as we have to wrap the session up today. Let me quickly share with you what we discussed. Although you have been spot on, all of you who have shared your responses. We talked about personality and character ethics and the difference, and very rightly pointed out, one is about inner self and the other is about only the outer self. So you can only have a sustainable outer reflection once your inner self is aligned with those timeless principles, which EPSM is going to help you. How EPSM is not going to talk about the personality ethics, it's going to talk about the timeless principles, why they are important, and how in different situations you are supposed to align them into your behaviors. Then we talked about that character is the eventually destiny that helps you to grow in life. It's not about fate only, that one individual is more blessed than the other. It's about that the people who seems to be blessed, they are the ones who actually make sure that their character is strong, and by expressing these strong characteristics of the character, they eventually end up shaping up their destiny by their own hands. Then we talked about the future of the finance profession. I shared with you a table extracted from a recent report that ACCA and PwC has developed. This report talks about the future of the finance profession. And by the way, how many of you have read those 2 pages which I shared on the future of finance? Any yeses and nos, please? I last time shared 2 pages summary of this report, Future of Finance. Thank you. Safdar Arshia, you did. Muhammad Rafi, you did. All right. Any other? Nobody else? Okay, fine. So we talked about this future of profession. A lot of traditional tasks are going to be replaced by the automated processing within the accounting and finance profession. Data is going to take the center stage, and data analytics are going to take the center stage for any finance professional, any professional accountant. And therefore we also talked about what is data analytics and what is its importance. uh, Tamina on that conversation shared useful insights about her experience on the data analytics and others as well. Uh, then obviously, as I told you, EPSM is going to give you a complete unit on the data analytics, and that is going to be very interesting for you to sharpen your skills around this data analytics. And then that is not end of that data analytics. It's a big a branch of knowledge developing as we speak, and therefore EPSM will give you enough base. Then on that base you would be able to develop a structure as high, as strong as you possibly can. That will depend on the effort that each of you is ready to put into this data analytics skill going forward. We talked about emotional intelligence and we stopped at get to know yourself, and that's where we are going to begin once we are back from namaz break. I have 7:02 with me at the moment. We will be back by 7:12 after the namaz break, and then we will continue from emotional intelligence, and then we'll wrap up today the session of on EPSM. Namaz break is for 10 minutes, Mohammad Rafi. 7:02 is time at my clock at the moment. We will be back by 7:12, 7:13. So speak soon in 10 minutes. Thank you.
All right, so it's 7:13. Please let me know if you are all back by typing yes so that we can continue. Thank you, Rabia. Thank you, Daniel, Rizwan, Memuna, Saima. Thank you, Saqib. Thank you, Nimra. Thank you, Abdurrahman, Fareed, Umair Afzal, Saud Ahmed, Aisha. Thank you, Javeria. Thank you, Safdar Khan. Thank you, Sham. Thank you, Naila. Thank you, Osama, Maria Iqbal, Muhammad Tayyab, Muhammad Amir, Faik Abdullah. Faik, I will ask Mutahid to update you where to send the story in the end of the session. So since you all are back, let's continue. And today I'm going to replay the video that we did last week on emotional intelligence. We will quickly talk about emotional intelligence being one of the very important piece because your creativity, your leadership skills, your team management skills, the source of all these things is emotional intelligence. So since we have given enough spotlight to data analytics, in the very same way I'm going to talk about emotional quotient as well, and then we will wrap it up by talking briefly about the other skills that EPSM is going to deliver you and give you a space and a base to think over. So let's watch the video. Let me know if you can listen the sound of the video. Can you listen to the sound? Please type yes so that I can play. Thank you, thank you, thank you, thank you. All right, so let's watch it again for our refreshing memories and then talk about it. Emotional intelligence refers to the ability to recognize, interpret, and process emotions in yourself and others. While genetics, upbringing, and environment all play a role, there are steps you can take to develop your emotional intelligence over time. Get to know yourself. Emotionally intelligent people are self-aware. They have a realistic appreciation of their strengths and weaknesses and how they come across to others. Peer feedback is one way of improving your self-awareness and may uncover a few of your emotional blind spots. Learn your triggers. Linked to the notion of self-awareness is knowing how you are likely to respond in particular situations. Think about how you felt the last time you were under pressure. Did these feelings help or hinder you? Recognizing emotions and the source of these emotions can shift your emotional state. Empathize. Seeing things from someone else's perspective will help you understand their values and beliefs. This is important when it comes to motivating and engaging others. Make a conscious effort to get to know your colleagues. Ask open questions and actively listen to what they have to say, rather than simply waiting for your turn to speak. Be on the lookout for body language and other non-verbal signs, as these may tell you more than someone is willing to express out loud. Own your emotions. Part of being emotionally intelligent is about taking responsibility for the way you interact with others. If someone upsets you, pause and reflect on why their actions led you to feel this way, instead of reacting impulsively. Recognize that a conversation is a two-way interaction, and it takes two people to make you angry, sad, or frustrated. Go with your gut. Finally, listen to your body. If your stomach starts doing backflips every time you speak to a senior manager, or your muscles tense up before you go into a meeting, what does this tell you?
Counterintuitive as it might seem, emotions can be a valuable source of information when making rational decisions at work. Remember, emotional intelligence isn't about suppressing emotions. It's about learning how to recognize, process, and channel them in a way that benefits you and your team. Enhancing your emotional intelligence requires effort, but it can be achieved with sustained practice. So, this was the video that we watched in the last session as well. Now, let us quickly talk about some of the contents of this video. And the tagline is "Get to know yourself." Now, as has been said in the video, and as has been said and written in so many different books and material which you may find on emotional intelligence, the headline will always remain "Get to know yourself." This is a never ending process. The more you progress in life, the more you grow in years, the more it is, getting along with you, that you continue to know yourself even better and better. uh, on emotional intelligence, there is a great deal of literature that anybody can find. People, experts, researchers have talked about this topic at length. However, if you really want to understand what emotional intelligence is, the previous video is enough for you to comprehend the subject completely. After this, there will always be explanation of certain important points. There will be examples to share with people. There will be different practices to tell you how you can actually achieve it, etc., etc. But in totality, if I talk about the concept, this concept has been very well captured by this video. And let's see what uh, has been captured. So I have, on this slide, picked up a few things that the video talks about. The very first thing is that emotional intelligence is not something in which people are best or very good at right from the beginning. Because one thing which this video and everybody else mention is that genetics, your upbringing, and your environment, it plays a very great role in shaping your emotional intelligence. Now, we all know that these three things are not in our control completely. Number one, genetics are completely out of our control. We were never asked that where you would like to born. So genetics is something that we cannot do anything about. Second, our upbringing. Obviously, whatever parental upbringing, whatever tutor upbringing, whatever religious scholar upbringing an individual is getting in the early days of his or her life, again, is something completely out of control. Nobody asks a child as soon as he or she is born that, okay, fine, tell me, where would you like to shift, which country would you prefer, which tutor you would prefer, what things like that. So obviously, until we are of age, until we are at least of age where we are able to decide on our own, and that is somewhere around 12, 13 years, we are subject to certain conditions that are completely out of control. Then third one is environment, and environment is also means your surroundings. So the area, the neighborhood that you live in, your neighbors, the people whom you interact with or find the opportunity to interact with, your family members, your friends, your parents' friends, etc. This is again not your choice. You are bound to interact with people who are around you. So your immediate surrounding, you cannot change them unless you have got that potential and you become of age, and then you are capable of taking decision of changing your surroundings. Until that happens, these three things are completely out of control. And interestingly, the time to develop this emotional intelligence in your unconscious mind happens to be the same as well.
whatever grooming, whatever values, whatever beliefs are going to be programmed through this genetics, through this environment, and through this upbringing, they are going to be programmed into the unconscious mind of every human being, no matter whether he or she is a successful individual, no matter whether he or she is a not successful individual, whether he or she is from this part of the world or whether he or she is from a different part of the world. All cases, these three things you cannot control as an individual. Therefore, to begin with, one thing that you already always have to keep in mind is this will be a conscious effort through practice for a lot of people, because majority of the people will not be strong on emotional quotient. Therefore, for everyone, this will be a conscious effort through sustained practice. Therefore, all those who would like to blame their past, their childhood, their upbringing, their neighborhood, their environment, uh, that is not going to help you, because this is with everyone. You cannot control these things, and you will have to go through a continuous conscious effort to do that, and that's what also this video talk about. Yeah, very right question, Mohsin. What are the controllable factors? So number one controllable factor is that if until today you were not introduced with this concept, or you have not ever thought about it, now is the time to get to the controllable factors, the manageable factors. And I'm going to talk about the manageable factors, that how you can do it. So number one step is the consciousness. The moment it starts in your conscious approach that I need to review myself, I need to understand myself more, the moment this voice triggers in your mind, that is the time where the manageable factors will come into the play. Now, what is the end outcome of being emotionally intelligent? That is the tagline, get to know yourself. And I told you in the last session that every great philosopher, every prophet, every great human being has talked about this, that get to know yourself. It is very important. How deep you are, how complex you are, how emotional you are, how rational you are, how impulsive you are, how aggressive you are, how reactive you are, how careless you are, etc., etc. So once you start discovering your own self, a lot of things are going to appear in front of you, which would be an eye opener for everybody. Peer review help in this a lot. So one exercise which is a manageable factor, ask someone who is very close to you about yourself. Ask him to become a critique and then criticize you. Talk about your good points, talk about your bad points. That will help you understand you more, because whenever you will try to look at yourself from your own point of view in the beginning, you will always be prejudiced towards a certain assumption that no, I'm not like that. No, I do this because people actually force me to do this. Now, this will always be the case. हमेशा लोग ही आपको कहेंगे, लोग ही आपको ट्रिगर करेंगे. आप जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर है, वहां पे लोग आपके लिए फूल और हार लेकर नहीं बैठे होंगे कि आप आए, काम करें, और वो आपको 2 साल गुजरने के बाद अगली पोस्ट पे ले जाएं, फिर 2 साल गुजरे वो आपको एक और प्रमोशन दे दें. सो लोग आपकी लेग पुलिंग भी करेंगे, लोग आपको इमोशनली डिस्टर्ब भी करेंगे, लोग आपको जो है वो डिफरेंट ट्रिगर्स देंगे जिससे आपकी इम्पल्स और आपका रिएक्शन आएगा. तो इसलिए ये कहना कि मैं जो करता हूं वो इसलिए करता हूं कि लोग मुझे वो करने पर मजबूर करते हैं, इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी विद द इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट. हमेशा लोग ही आपको ट्रिगर करेंगे ना, क्योंकि जाहिर है अब आप अफ्रीका के अंदर जाके शेरों, चीतों और जैबरों के साथ तो नहीं रहना शुरू कर देंगे कि वहां पर आपको कोई ट्रिगर कर रहा होगा. डेफिनेटली आप कहीं पर भी होंगे, यू विल बी सराउंडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. And when you are surrounded by human beings, so human beings will always give you opportunities, chances, जहाँ पे आप emotional outburst का शिकार होंगे, आप frustrate होंगे, आप aggressive हो जाएंगे,
आप अपना टेम्पर लूज कर देंगे, एंड बीइंग दिस कैरिड अवे यू विल लूज द स्पॉट। और आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है, टू कंटिन्यूअसली ग्रो इन कॉर्पोरेट सेक्टर आइदर थ्रू अ जॉब और थ्रू अ बिजनेस, एंड being able to become more financially independent as the day goes by, वो आपका टास्क, वो आपका गोल, वो आपका मिशन कहीं लॉस्ट हो जाएगा, एंड यू विल बिकम एन इंडिविजुअल हु विल बी एट द मर्सी ऑफ पीपल्स ट्रिगर्स। और हम इस तरह के बेशुमार लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपने अपने पीयर्स को, क्लोज पीयर्स को ये कहना है कि वो आपको आपके मुतालिक बताएं। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, एनी वन ऑफ यू ऑन द कॉल, और इस दफा मुझे 10-15 आंसर्स नहीं चाहिए, अगर इस वक्त 61 अटेंडीज हैं तो मैं चाहूंगा कि सब के सब मुझे इसका जवाब दें। डिड यू एवर सिट डाउन विद अ क्लोज colleague or with a close relative or a friend, and did you ever dare to ask them कि tell me about myself? Yes or no? So 1 yes, 2 yes, 3 yes. All right. Mutahid, if you could unmute Anam Kabani. I hope that was what is the pronunciation of her second name. If you could unmute Anam, I would like to hear from her why she does it every time. Where did we get this inspiration from? Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. So, Anam, first of all, Kabani is the right pronunciation. Is that so? Ji sir. Ji sir. Okay. So now the question I really want to put to you is, interestingly, you said you do it every time. The first question, why, who inspired you? I mean, or what factor inspired you to do this every time? And second, um, what have been the results that you have witnessed on your personality through this exercise? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरी दोस्त साइकोलॉजी पढ़ रही है तो मैंने इतना अपना आपको सिर्फ ये अपना सेल्फ रिव्यू किया था कि आई हैव एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो शी इज़ ऑलवेज लाइक कि आप रिजर्व नहीं रह सकते, आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, आपको लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, आप इस तरह से आप ग्रो होते हो। तो शी इज़ ऑलवेज लाइक कि यू कैन टॉक टू मी कि आपके अंदर ना हाँ क्या कमियां हैं, आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो आई फील माई फ्रेंड क्लोज टू मी, तो मैं अक्सर उससे बातें कर रही होती हूँ कि ये चीज़ है, ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन कि आपने क्या तब्दीली महसूस की है इस एक्सरसाइज को रिपीटेडली करने के बाद अपनी पर्सनालिटी में? सर चेंजेस आती है, कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, आई हैव सर्टेन ट्रस्ट इश्यूज, या मैं सबसे बात नहीं करती, आई हैव अ कंफर्ट जोन, तो वो चीज़ उधर इम्प्रूव होती है। मेरा इनर सर्कल ग्रो करना शुरू होता है कि जिसमें दूसरे लोगों से इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी आर यू वर्किंग करंटली और यू आर स्टडिंग ओनली? आई एम स्टडिंग, मगर मैंने आर्टिकलशिप्स अपनी मैंने इंटर्नशिप की थी 5 मंथ्स की EY में। ऑल राइट। सो डिड दिस एक्सरसाइज हेल्प यू? कब से कर रही हैं आप ये? फॉर हाउ मच टाइम यू आर डूइंग दिस? सर ये 2 years। और 2 साल में अब तक आपको अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से टुवर्ड्स अ मोर नॉर्मल इफ नॉट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की तरफ प्रोग्रेस नजर आ रही है? जी सर पर्सनालिटी अब भी इंट्रोवर्ट ही है, मगर एक कम्युनिकेशन जो मुझे गैप लगता था ना, वो अब रिड्यूस हुआ है, वो बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल ठीक है। Thank you very much, Anam, for your feedback. This is very healthy. Keep on doing this. Thank you, All right. So let's pick another individual. All right. This is interesting. If you could unmute Amna Maheen, I would like to ask her that why she is only interested in her first impression and not the long-lasting impression. Amna, please unmute yourself. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji Amna. So why only first Sir, impression? actually, Why not a long-lasting ac- impression?
जी I please. usually ask about the first impression to, get to know how far I've come from that impression that I made the first time people met me. So the intention was not self-improvement at that time, but usually, it's not something started doing on myself. If someone approached me, one of my friends who had known me for a long time and said that when I first met you, I thought you were like this and like this. And I asked, how am I now to you? So that is Mm-hmm. when I started asking and just to assess how far I've come or how different I am than what people perceive me to be. All right. Thank you. Another thing which I would like to refer here is there are so many cliches that we hear every other day. Cliches mean statements that are too common. As I said in the beginning, your attitude is your altitude. These are cliches. You will hear them from so many people in the corporate life, people who are successful, and these are right statements. There is nothing wrong about it. But sometimes we end up placing a lot of emphasis than is required on these cliches. uh, we should always try to reflect each and every statement that comes our way. We should have this internal ability to look through this statement and apply this into your circumstances and then see what the result comes back. You know, it is a very good idea to be able to create a first good impression. But first impression is the last impression is something, a cliche, a very overrated statement. It does not mean that you should not do it right the first time, because obviously the zero tolerance philosophy of making things uh, emphasize on this point that always try to make it right the first time. That is completely agreed. But again, we are human beings. We should not be let down by a situation we were not when we were not able to place or keep this first impression right. There always is a second chance. So just to give an idea that sometimes people get disheartened that, I met that individual, I was not able to reach in time, and it really tarnished my impression. How am I going to see that individual again in my life? How am I going to make him or her usable for my particular goal? How am I going to approach them, etc.? There is nothing to be worried about. You always make mistakes. Although try your level best not to commit them, especially in critical situations. But again, we are human beings. We will always commit mistakes, and it does not mean that if we were not able to create that sort of an impression, we are not going to get another chance. There always will be a second chance, and sometimes that mistake is a blessing for you because you would learn what you have lost because of that one small mistake, that you reached at that destination 5 minutes late than you were supposed to. And the kind of looks that individual gave you and the kind of attention that the individual gave you will give you a lesson for the rest of your life, that never ever become 5 minutes late. You were all prepared, you were dressed up very well, you had all the meeting notes with them, with yourself, but the only factor that tarnished your image was you were 5 minutes late. And had you left your working place or home 10-15 minutes earlier, you would have been reaching there 5 minutes earlier than 5 minutes late. So saying that, it's important because you always commit mistakes. Don't be disheartened by them. There always is a second chance and you can always improve, but do not repeat on committing a mistake. That is important. That if you have mistaken once, then obviously you should not be mistaken on that same issue the other time. That is very important. Okay, Muhammad Mohsin has to say, I think every impression has its own impression, but the first impression is the significant one. No one disagrees, Muhammad Mohsin. Most definitely, first impression is significant one, but it is also very important that if by chance, being a human, you have committed a certain small mistake, don't let yourself down. Don't be demotivated. There always will be a second chance. How do you make yourself approachable? Because every time I ask people how they found me, the first time is not approachable, arrogant. Yes, you have, pointed out a very important aspect. Mutahid, if you could unmute Khwaja Asif.
I would like to talk. Sorry, Khola Asif. My apologies. Khola Asif. It's not Khwaja Asif. Hello. Yes, Khola. Yeah. Every time I come across people who are now very good friends of mine, they always tell me that the first time we saw you were not very approachable. You sounded rude. You looked rude. You didn't want to be approached. So I really don't know how to work it out, because now that you ask me, I am the friendliest person. I am the best friend they ever had, or all the positive things. But Yeah. the first time that they see me is not very pleasant for them, apparently. And Mhm. you don't know how to rectify that, right? Because that is your body language that has been there since like forever. and uh, You're and and working on that and making it better, a better experience for others for the first time, is definitely very difficult. And I would really like to, like, your everybody's help, and how to improve that. sure. This is very important. It happens, and usually it happens with people within our profession. There are different reasons, and everybody, it's not one size fit for all. Uh, it To understand this better, you need to refer to the conversation we had on the inner self and the outer self. So, whatever your body reflects, whatever your emotions on your face reflects, are being triggered through internal assumptions, internal beliefs, internal myths that you carry with yourself most dearly. How do they develop? They develop over a period of time through different sources. Upbringing is one, your circumstances in the childhood is another. Similarly, the people who you came across right from the beginning is another one. Usually, in when you are a child, you always want to meet people. You always want to become humorous. You always like to be, friendly, and you always sound friendly as well. There is hardly a chance that a child is born so critical that even in the age of 1 year or 2 year, whenever a relative or anybody else looks at that child, the child gives back very frowning responses that don't come near to me, don't dare to approach me, don't dare to come near. I often use a terminology for such people because I myself have gone through this is through this period situation for once in my life, long ago. And I used to use the phrase "don't dare to come near" is the kind of facial expression that usually people in such issues express. Now, as I said earlier on, there can be different reasons for that. Your upbringing, your circumstances, your past, and your bad experiences. That is the biggest trigger. Why do people become aloof? Because of their experiences. And this is known as experience bias in the corporate terminology. Experience bias mean if I met a somebody in the early ages of my life and he deceived me or she deceived me, then in that early age I am so innocent that I would always think that people always deceive you, and my trust will be broken deep inside. Time will go on. I would not realize that somewhere that deception has created its own mark in my emotions, in my unconscious mind, and now that is haunting me on daily basis, while at the same time I'm not able to realize that that individual internal belief that was caused by an unpleasant experience, have led me to this. So this happens. Another thing of such situations could be the environment. So usually people who come in this professional accountancy profession, they are deep thinkers, and that's why they choose such a field. Whenever you are deeply rooted in your thoughts, your facial expressions are always lost. You don't seem attentive. You don't seem catching attention of other people as well.
So people who have the tendency of having deep thoughts naturally also ends up in the same way. you know they also affect you. So you would always encounter that people who are philosophers, people who are intellectuals, people who have a tendency to think deeply naturally, or they develop this over the course of their life. Whenever you will see at them, you will find a certain sense of cold expression on their faces, although deep inside they are very kind, deep inside they are very modest, deep inside they are very humble, deep inside they are always willing to help, deep inside they are always willing to group up and spend time together. But there always will be a look on their faces that will communicate to others that this individual should not be approached. That could be another reason. So always look out for the deeply rooted beliefs. And that's what paradigm is all about. As I told the story, that paradigm is something which we usually neglect, and it should not be neglected. We should always think what our deeply rooted beliefs, myths are. And in this, I will advise you to go on the Google today after the session, or tomorrow, or whenever you get a chance, and look for the uh, iceberg model by Hofstede. Hofstede was a big researcher on culture, and he has talked about behaviors. He actually created this model to understand somebody's behavior, a community, an individual, a nation. That is called iceberg model. And Hofstede says that in the on the iceberg which an individual can see from the surface of the sea is only the outer side, and that outer side of the iceberg is equivalent to an individual's behaviors, body language. Now deep in the sea there is 80% of the iceberg. Yeah, this is in F1 as well. In that iceberg which remains hidden under the sea, that the Hofstede equates it with internal beliefs, values. So on the first step there are values under the sea, and beneath those values there are beliefs, there are myths, there are assumptions. How these assumptions are created? Again, upbringing, again brought up, again environment, which you are not in control of. But what you are in control of is at this stage, when you have realized this, that you have got this issue where people feel you are unapproachable, you should always go to the peers and ask, what do they see in you when they first met you? And then try to correlate that which of this facial expression is coming out of which particular root. You will find experiences, you will find myths. So for example, usually parents, we went to a school which was very I would say, क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा ही जहाँ पे सख्त माहौल होता है. जिस तरह से आप अक्सर देखते हैं कि ये जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है और बच्चों को ओपन अप करने का मौका कम मिलता है. सिमिलरली इसी तरह से बाज दफा घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे ओपन अप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है. स्लोली एंड ग्रेजुअली, विदाउट इवन रियलाइजिंग, आप क्लोज्ड होना शुरू हो जाते हो. Yes, obviously, Kola, we don't know how things affect us, but it is always a conscious practice to try to correlate things, and you start getting the answers. This is not like that कि आप जब अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो शुरू में ही आपको पता होता है कि आप कौन है. आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस. जिस तरह से पीयर रिव्यू एक अप्रोच है, अभी मैं बाकी अप्रोचेस की भी बात करता हूँ. So to sum it up, जो बात खौला ने की है कि why do you look unapproachable, you need to find out the triggers. और वो मेरा अगला पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर बात हो रही है. Ponder on your trigger points by way of reflecting on your experiences from the past. आपके हमेशा ऐसे certain experiences होंगे जो आपको certain conclusions देंगे. आपके पास दो options हैं. उन conclusions को या तो आप समझें कि ये permanent है,
जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी ने आपको धोखा दिया और आपने कहा लोग हमेशा धोखा देते हैं, अब आपने ये अपनी अजम्पशन बना ली और अब आपका बिहेवियर एक्स्ट्रा कॉन्शियस होगा हर किसी के साथ। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल ने आपको धोखा दिया है, इट डज नॉट मीन कि सब ऐसे होते हैं और लोग पॉजिटिव भी होते हैं और आपको पॉजिटिव साइड पे रहना। जिस तरह एक बड़ी फेमस और बहुत ओवररेटेड सी बात है कि किसी का लाल रंग का मुंह देखकर आप अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के उसको लाल नहीं कर लेते। सो सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल मिलता है लाइफ में जो आपको डिसीव करता है या जो कोई नेगेटिव वैल्यू एक्सरसाइज करता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या आप कहेंगे दुनिया सब ऐसी ही है और अब मुझे भी ऐसा ही हो जाना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको पता है कि ये ठीक चीज नहीं है, अगर सारी दुनिया एक तरफ भी है तो मुझे फिर भी ठीक साइड पे रहना है। और हमसे अल्लाह भी यही एक्सपेक्ट करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म के माहौल में हैं, और ये किसी को आखिरत में इस चीज की गुंजाइश नहीं दी जाएगी कि आपका माहौल ऐसा था आप सच नहीं बोल सके, आपका माहौल ऐसा था कि आप फेयर प्ले नहीं कर पाए, आपका माहौल ऐसा था या आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे थे। ये कोई गुंजाइश इंसान को नहीं दी गई है अल्लाह की तरफ से भी। सो बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हमने हमेशा साइड राइट साइड को पिक करना है, और उसका फायदा क्या होगा कि हम उस एक्सपीरियंस को जनरलाइज नहीं कर रहे होंगे कि सब धोखा देते हैं, और फिर वो एक्सपीरियंस आपका ट्रिगर पॉइंट बनेगा इन अ पॉजिटिव वे कि आप कहेंगे कि मुझे ठीक करना है, मुझसे एक दफा किसी ने बुरा किया था। जिस तरह एक मैं और आपको मिसाल देता हूं कि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि फर्म्स के अंदर चाहे कोई आई कैप का ट्रेनी है, चाहे कोई एसीसीए का ट्रेनी है, और हर जगह पे मेरी फैमिली में बहुत से डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के केस में भी ऐसा होता है, जो ट्रेनीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा रिडिक्यूल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, और समझा यह जाता है कि ट्रेनिंग इसी तरह से ही होती है, रगड़ो अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ जगहों पे वो बहुत इनह्यूमेन ट्रीटमेंट भी होता है जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है उस ट्रेनिंग की, वो नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ओके फाइन, अगर पर्सन ए, अगर हसन अशरफ एज अ ट्रेनी उस सारे एक्सप्लॉइटेशन के प्रोसेस से गुजरा है जिसके अंदर उसको लगा कि 20% या 30% चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, 70% ठीक है, आप ज्यादा काम दें, आप वर्कलोड डालें, आप प्रेशर डालें, आप टेस्ट करें किसी को, उसको स्ट्रेच करने का मौका दें, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन 25% 30% चीजें ऐसी हैं जहां पे आपकी सेल्फ को किसी ने हर्ट किया। अब जब कल को आप सुपरवाइजर बनेंगे, जब कल को आप मैनेजर बनेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि वो सर्कल टूटने की बजाय वो जारी रहता है। आप हसन अशरफ ये कहता है कि चूंकि मेरे साथ ये हुआ था मैं भी अब ये करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में रैगिंग होती है आपकी। हर जनरेशन ऑफ बैच ये कहती है कि हमारे साथ हमें किसी ने छोड़ा था जो हम किसी को छोड़ें। सो ये सर्कल कंटिन्यू रहता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको एज एन इंडिविजुअल लाइफ में ऐसा ट्रीटमेंट मिला है एक खास फेज के अंदर और आपको लगा कि वो गलत था और वो ह्यूमेन नहीं था, आपका काम ये है कि स्टे ऑन द राइट साइड। और जब आपके पास वही मौका आए तो आप लोगों को उस तरीके से ट्रीट मत करें जैसे आपको ट्रीट किया गया था। अगेन आई अंडरस्टैंड मोहसिन, बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अगेन आपने ये देखना है कि आपने दुनिया की तरफ रहना है या पॉजिटिविटी की तरफ रहना है। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो स्टैंड आउट करते हैं या उन लोगों में जो दरिया के धारे के साथ बहते हैं। जब भी आपने स्टैंड आउट करना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वो नहीं हैं जिन्होंने रन ऑफ द रिवर के साथ ट्रेवल करना है। आपको अलहदा खड़े होने की पॉसिबिलिटी हमेशा नजर आएगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे जब आप सीनियर पोजीशन पे पहुंचे तो आप अपने ट्रेनीज को उस तरह से रिडिक्यूल ना करें कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। तो हमेशा आपके ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, उन ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर आपको गौर करने का मौका मिलेगा व्हेन यू गेट टू नो योरसेल्फ। और वो ट्रिगर पॉइंट्स हमेशा आपको इम्पल्सिव करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको इमोशनल करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, पीपल मैनेजमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है। क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे हमेशा ये एक्सपेक्ट करें डाइवर्सिटी होगी, पीपल विल टॉक अबाउट देयर ओन ओपिनियंस, they have come from altogether different backgrounds, they will come from all sorts of different functional backgrounds,
जैसे मिसाल के तौर पे मार्केटियर्स के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो लेविश स्पेंडर्स होते हैं, और फाइनेंस के लोगों के मुतालिक कहा जाता है कि वो माइजर्स होते हैं। अब आप गौर करें, ये दो एक्सट्रीम पोजिशंस हैं। एक तरफ एक इंडिविजुअल है जो फजूल खर्च कंसिडर होता है, एक तरफ एक इंडिविजुअल है जो कंजूस कंसिडर होता है। अब आप इमेजिन करें कि एक कंजूस और एक फजूल खर्च, दो लोग इकट्ठे होकर एक शॉपिंग मॉल में चले जाएं और उनके पास एक ही पूल ऑफ फंड है जो उनके उनके पेरेंट्स की तरफ से मिला, तो इमेजिन करें क्या होगा उस शॉपिंग एक्सपीरियंस के मुतालिक। अगर आप इमेजिन करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या उसमें बहस होगी, क्या उसमें लड़ाई होगी, क्या उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज के लोग एक काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, फाइट होगी, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। इसी तरह से बोर्ड रूम के अंदर भी आपके सामने एक मार्केटियर बैठा हुआ है, वो एक इनिशिएटिव को, एक कैंपेन को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है आपकी नजर में, बट एट द सेम टाइम आप ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बात नहीं है जितना आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मैंने आरओआई का हिसाब देना है, आप मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे हैं इस छोटी सी एक्टिविटी के लिए जो 8-10 हजार में हो सकती है, मैं क्यों 1 लाख का फंड रिलीज करूं, एक टाई आ जाएगा। अब पुराने जमाने का अकाउंटेंट इस सिचुएशन में माय हाईवे और माय वे वाली अप्रोच से चल सकता है, जिस तरह फेमसली कहा जाता है माय वे और हाईवे, या मेरे रास्ते पे आ जाओ या फिर जाओ हाईवे पे, जहां जाना मुझे तंग मत करो। पुराने जमाने का अकाउंटेंट जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ऐनक होती थी मुंह के ऊपर और बड़ा उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ही उसका बोरिंग और डल और नॉट वेलकमिंग फेस होता था, वो चल जाएगा पुराने टाइम के अंदर। आज के टाइम के अंदर हमने जिस तरह उस टेबल में देखा कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये जो बिजनेस पार्टनर की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को दी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये और जगहों पर भी आना शुरू हो जाएगी, इसका एक बड़ा रीजन यही है कि आपका काम होगा लोगों को अलाइन करना। आप सेंटर में होंगे, सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी, कंप्लाइंस, गवर्नेंस, ये सारे डिपार्टमेंट आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे, क्योंकि पैसे आपके पास हैं, पैसे रिलीज आपने करने हैं, उसका आरओआई डिटरमिन करके फंड्स देने आपने हैं, फंड्स देने की जिम्मेदारी आपके पास है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप हर एक्टिविटी को स्लैश कर दें जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्सनैलिटी एक माइजर की है जहां जो पैसे बचाना चाहता है, और मार्केटियर की पर्सनैलिटी जो है वो एक लेविश स्पेंडर की है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस स्लाइड पे अगला पॉइंट है, और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग यही करते हैं, एम्पथाइज, सीइंग थिंग्स फ्रॉम समबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव। और ये बड़ी हिम्मत का काम है, दिस इज नॉट सिंपल, you always have to look at things from people's perspective. This is like I am standing at the bottom of the hill and I'm talking to somebody who is standing at the top of the hill, and we both are trying to communicate with each other, and we both are trying to make the other person understand. That will never happen. Why? Because the view of the person from the hilltop is altogether different, and the view where you are standing is altogether different. It's not about whose views is correct, it's about two different views. And obviously, when you cannot align this, there always will be a confrontation and argument. And that's why the video says it will always be two people who would make you angry or happy, because communication is a two-way process. So do not think that this individual makes you unhappy all the time. Somewhere you are also playing a role in that, but you do not realize. Why? Because you are not an active listener. How you can empathize? You can empathize by being active listener. Most of the times we only listen just to wait for our turn and then respond. Active listening means absorbing each and every word and each and every statement, each and every emotion, each and every vocal cord while somebody is speaking.
Then, being objective. For the time being, set aside your assumptions, set aside your prejudice. For the time being, forget about being yourself. Try to put on the hat of that individual who is talking to you. So while listening, be objective. Try to understand that, okay, let me hear what he has to say. Let me see what sort of point she has to come put across, and then see if it has merit or it does not. And by the way, the advantage professional accountants have in such arguments and conversation is that you will always be having facts, ROI, previous year figures, expense sheets, remaining budgets, priorities. You will always be having facts. And you do not need to go with the maxim my way or highway. You can always convince people with the facts and figures that are readily available with you in the form of data and information. So, why to become subjective? Why to become prejudiced? Why to become emotional? If you have to turn something down because you feel that this particular project is not worth it, there are 100 ways of doing it. Why to react? But usually, we as human beings remain unable to do that. Then look out for non-verbal signs. Sometimes a marketeer is proposing or a salesperson is proposing a certain project because it means livelihood to him. And you need to understand that. Sometimes you are not only refusing money for a certain project, you are actually giving that individual a notification or a kind of non-verbal declaration that you are going to lose your job. Because obviously वो ये समझता है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके लिए कुछ करने को होगा, और वो उसका रीजन है टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको भी तो कुछ करना है ना, वहां पे फारिग तो नहीं बैठना ताकि एक वन फाइन मॉर्निंग उसको कहा जाए कि यू आर नो लॉन्गर नीडेड। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट इसलिए भी इनिशिएट कर रहे होते हैं बिकॉज दे फील कि दे नीड टू रिफ्लेक्ट दैट दे आर डूइंग समथिंग। नाउ डीप डाउन यू फील दैट दिस इज जस्ट a reason to stay active and to look good, but effectively this is not going to help the organization. How would you react? Would you say, no, I'm not going to do that? That will create a confrontation. And trust me, accountants are not like deputy commissioners, or accountants, professional accountants are not like judges in the in a courtroom, you know, जिनको कोई disrespect नहीं कर सकता, जिसके ऊपर कोई तौहीन अदालत लग जाती है। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, या जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, वो डेली बेसिस पे कॉन्फ्रंटेशंस नहीं देखना चाहती। और अगर आप उस कॉन्फ्रंटेशन का रीजन बन रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू बी एडमायर्ड बाय देम, और वो कहेंगे लुक आउट फॉर अनदर पर्सन, we do not want to work with this individual because he or she always comes with trouble, he does not let us work. Therefore हमेशा नॉन वर्बल साइंस को देखें। बाज दफा लोग आपको डायरेक्टली नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो आपके कॉलीग्स हैं, वो आपके कोई फ्रैंक दोस्त नहीं है जो आपसे खुल खुलाकर बात कर पाएंगे। बट हर इंसान, जिस तरह अभी बात की खौला ने, कि आप हर इंसान अपनी इंटरनल इनसिक्योरिटीज की रिफ्लेक्शन अपने चेहरे पे लेके आ रहा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी में और इमोशनल अनइंटेलिजेंट आदमी में फर्क ये होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान उन लुक्स को, उन एक्सप्रेशंस को रीड करने की सलाहियत रखता है। सो दैट्स हाउ यू एम्पथाइज। चौथी चीज, हमेशा अपने इमोशंस को ओन करें। क्या मतलब है इस बात का? सप्रेस मत करें खुद को, जो आपके इमोशंस हैं उनको ओन करें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप हैं तो आप, या किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब आप हैं तो आप हमेशा एक सर्टेन इमोशनल एक्सप्रेशन देंगे। कहीं पे आप पैशनेट होंगे फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट, बी पैशनेट, देयर इज नो हार्म इन दैट। बट होता क्या है, जैसे ही कोई उस इमोशन के खिलाफ बात करता है आप एकदम रिएक्ट करते हैं। दैट इज नॉट गुड। देखें, आपकी अपनी चीज है, योर इमोशन इज योर प्रॉपर्टी, दैट इज समथिंग फ्रॉम यू, नोबडी कैन स्टील इट। हमेशा इस बात को याद रखें। किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर आपको आपके इमोशनल इनपुट के ऊपर या आपके इमोशनल एक्सप्रेशन के ऊपर
रिबफ किया जाता है, रिबटल दिया जाता है, उसको डिसएग्री किया जाता है उससे, डोंट रिएक्ट इम्पल्सिवली। डू नॉट फील कि आपके इमोशंस को किसी ने हर्ट कर दिया, डू नॉट फील कि आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की किसी ने, बिकॉज कॉर्पोरेट कॉन्वर्सेशंस एंड प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस आर नॉट अबाउट कि कोई किसी की इमोशनल सूदिंग कर रहा होता है। इट इज ऑलवेज अबाउट डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द टेबल। अपने इमोशंस को जरूर ओन करें। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, अपना पूरा पैशन बताएं कि देखें मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बजट की सिचुएशन है, ये टाइम विंडो है, ये प्रायोरिटीज हैं, ये आरओआई है। पूरे पैशन से उस बात को करें कि क्यों आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं विजिबल या नहीं वायबल, लेकिन रिएक्ट मत करें। ये ना समझे कि किसी ने आपके इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, लेकिन आप चूंकि इमोशनल बीइंग हैं और लेस इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, आप फौरन ये ख्याल करते हैं कि किसी ने आपके इमोशंस को हर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। दूसरा इंसान सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू टेबल पे रखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो भी उस चीज को लेकर उतना ही इमोशनल होता है जितना आप होते हैं। और आखिरी चीज, गो विद योर गट, और इसको मैं कहता हूं हमेशा सिक्स सेंस। लोग कहते हैं कि ये कोई अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है या ये होता है, ये हर किसी के अंदर मौजूद होती है। सिर्फ ये फायदा उनको देती है जो इसको शार्पन करते हैं। ये सिर्फ उनको बेनिफिट देती है जो लोग इस सिक्स सेंस के ऊपर काम करते हैं। और सिक्स सेंस के ऊपर काम करना क्या है? ऊपर वाली सारी चीजें अगर आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सिक्स सेंस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। यानी जितना ज्यादा आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझेंगे, एम्पथाइज कर पाएंगे लोगों के साथ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप होगा जो आपको ये हेल्प करेगा कि as soon as you are in a company, as soon as you are in a gathering, you would realize कि कौन से लोग हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जिनको आपने डायरेक्टली हेड ऑन नहीं लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये कुछ चीजें थी जो वीडियो के ही कंटेंट को मैंने फर्दर एलैबोरेट किया है। लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ messages you people have been doing. All right, welcome new initiative of cooking on a budget. Normally ऐसा होता भी है या होता भी है ना मार्केटिंग साइड से। ओके, वी हैव टू सेटल। जी बिल्कुल मोहम्मद मोहसिन, आपने ठीक बात की कि चूंटी मार के भी हाथी मरने जितना शोर मचाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह है मार्केटिंग वालों का जो फंक्शनल बैकग्राउंड होता है वो होता ही बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप इस स्लाइड को प्रोजेक्टर पे डाल के बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो स्लाइड है इसके अंदर जो कंटेंट है वो तो वही रहेगा, चाहे वो एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे हो या इस लैपटॉप पे हो। लेकिन चूंकि उनका काम होता है चीजों को प्रेजेंट करना, ग्लोरीफाई करना, प्रोजेक्ट करना, स्पॉटलाइट देना, इसलिए वो यूजुअली इस तरह की चीजें करते हैं। और हमें इसको माइंड नहीं करना चाहिए एज फाइनेंस पीपल, क्योंकि हमारा काम इसके टोटली ऑपोजिट है। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ जाना होता है, सेंसिटिविटीज को देखना होता है, वगैरह वगैरह। we have to settle at the middle point. Again, agreed. Middle point is a good option to settle down on. So should hilltop should come down? Murtaza, you always come back with what I would say. Yes, differences both are right from their perspective. मुझे ऐसा लगता है यहाँ के यहाँ तो आइडियल सिनेरियोज की बातें कर रहे हैं जिसका पीके मार्केट और प्रैक्टिस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल राइट, सो मुतहिद अगर आप अबू बकर अनवर को अनम्यूट कर सकें, आई वुड लाइक टू टॉक टू अबू बकर। आई थिंक वी एग्री विद अ सूटेबल or in between situation. This could result in some outcome, but I think our integrity would hit and our perception might change about the other person. We need some practical scenarios in Pakistan instead of ideal scenarios. What else my help with this regard? जी अबू बकर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। जी आप बताएं, आपको क्यों लगता है कि ये जो बातें हैं ये मार्स की बातें हैं, ये उन मुल्कों की बातें हैं जहाँ पे हम नहीं हैं और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? सर मैंने तो अब यही देखा है मार्केट के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आपको ट्रीट ही इस तरह से किया जाता है।
अब आइडियली तो ये होता है कि अपने आप को आप कैसे काम कर सकें। सेठिया कल्चर मेन मोस्टली कंपनीज के अंदर होता है, तो वहाँ पर तो आपको बस इन्फोर्स कर दिया जाता है और वही आप अपने नीचे ट्रेनीज तक जो है वो वर्क बर्डन को शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब कैसे आप अपने आप को रोक सकते हैं इस चीज से। मतलब एक ह्यूमन नेचर है, मतलब ह्यूमन एक लेवल तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, फिर उसके बाद तो आपकी बर्दाश्त भी जवाब दे जाती है। नहीं तो सबसे बड़ा मसला आपको क्या फेस करना पड़ता है जब आप नीचे काम डेलीगेट कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप अनफेयरली डेलीगेट कर रहे हैं अपनी टीम को? सर मोस्टली अब मैं तो कोशिश यही करता हूँ एब्जॉर्ब करने की। मतलब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि एब्जॉर्ब करूँ चीज़ों को, जितना मैक्सिमम मैक्सिमम मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन फिर उससे आप ओवर बर्डन हो जाते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, मेंटली आप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब डेडलाइंस मीट नहीं हो रही होती। तो ये मतलब वर्क बर्डन, मैं तो यही सिनेरियो समझता हूँ कि यार दो बातें हैं, या तो आप उस काम के लिए इनकम्पिटेंट हैं या आपको ओवर बर्डन किया जा रहा है। तो ये और ये सिनेरियो मतलब मल्टीपल जॉब स्विच करने के बाद मुझे ये हुआ कि यार भाई ओवर बर्डन किया जाता है आपको। आप कितने भी अपने आप को स्किल्ड कर लें, मतलब एक्सेल स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर ली आपने, अपनी आईटी स्किल्स कर ली, मल्टीपल ईमेल्स करके आपने उनको लीनियंट होकर बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन एट दी एंड कह दिया जाता है कि नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवर बर्डन किया जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया जाता, ये पूरी दुनिया में किया जाता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड कोई इजी बैटल नहीं है। जो भी इसमें आता है वो ये चीज अपने जहन में रखे कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी रन, पहली चीज। और दूसरी बात, लाइफ इट्स इन इट्स ओन सेल्फ इज नॉट एन इजी रन। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जिन लोगों की बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स होती हैं वो 14-14 घंटे काम करते हैं टू कीप देम फ्लोटिंग, जस्ट टू कीप देम फ्लोटिंग। ठीक है। इसी तरह सही। आप एक इंडिविजुअल की बात करें, मैं अक्सर इसमें मिसाल देता हूँ। घरों में हमारी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, खास तौर पे हमारी माएँ होती हैं, एंड आर स्पाउसेस, पीपल हु आर मैरिड। सो खास तौर पे हम देखते हैं कि ये एक ऐसी जॉब है जिसका कोई सैलरी पैकेज बैंड डिटरमिन नहीं होता, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक घर चलाना 2 घंटे का काम है? अगर आपके पास बहुत सारे मेड्स भी हों तब भी क्या घर चलाना 2 घंटे का काम है दिन में, या 3 घंटे का बिल्कुल काम? सर, बिल्कुल बिल्कुल। पर सर वहां पे तो फिर इमोशंस भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जाते हैं वहां पर तो कहा जाता है कि भाई इमोशंस अपने साइड पे रख दें आप। बिल्कुल ठीक है। इमोशन। मैं जी। आता हूँ। आप पहली बात से एग्री करते हैं कि जिंदगी हमेशा मुश्किल ही रही है हर इंसान के केस में, वो किसी भी फ्रंट पे है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुराने वक्त गए जब लोग सुबह 8:30 बजे जाते थे दफ्तर और 2:30 बजे घर आ जाते थे और एंड ऑफ स्टोरी। अब ऑब्वियसली इट्स नॉट द केस विद एनीवन। ये सर तो अब हम तो इस पॉइंट, होमवर्क दे के घर भेजते हैं, लैपटॉप भी साथ होता है। एग्जैक्टली तो इस पर तो हम अग्रीड हैं कि जो स्ट्रेच करने वाली बात है वो हर कोई कर रहा है, चाहे वो कहीं पर भी है, स्टेट कल्चर में है या वो किसी बिग ब्लू चिप कॉर्पोरेट कंपनी में है। जो वर्किंग आवर्स हैं वो ऐसे ही हैं। और ये अगर आप लिटरेचर भी उठाकर पढ़ेंगे तो एक टाइम पर जो वर्क लाइफ बैलेंस का तस्वर आया था वो इसी वजह से आया था। वर्क लाइफ बैलेंस का तस्वर पाकिस्तान से नहीं आया, वर्क लाइफ बैलेंस का तस्वर वेस्ट से ही आया था, और इसका मतलब है कि वेस्ट के अंदर ये चीजें थी। 5 वर्किंग डेज का तस्वुर भी वेस्ट से ही आया था, वरना हमारे पास यहाँ पे अभी भी 6 वर्किंग डेज है। इट मीन्स के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस वर्क लाइफ बैलेंस को करने के लिए। अब पिछले 15-20 साल से, और सजीद अक्सर ये बात आपको कहते हुए नजर आएंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक मिथ है, खास तौर पे पिछले 10-15-20 साल से, जब से हम सोशल टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि अब आपका काम इंटीग्रेट कर चुका है आपकी लाइफ के साथ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लैपटॉप घर लेकर आ रहे हैं, ईमेल्स आपके मोबाइल के ऊपर कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं। तो जहां पर भी हैं, यानी आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद ऑफिस से उठकर अपनी किसी पर्सनल फैमिली कमिटमेंट में मसरूफ है, एकदम कोई मैसेज आएगा, एकदम कोई ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, कल का कोई और रिमाइंडर आ रहा होगा, तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली काम पर भी है और कॉन्स्टेंटली घर पे भी है। इसकी बिल्कुल सबसे सर। अच्छी इसकी सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन कोरोना के दिनों में हुई है, जब लोगों ने घर से काम करना शुरू किया है, तो ये इंटीग्रेशन उनको समझ आई है। अब मेरे केस में क्या होता है कि सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक मेरा लैपटॉप, मोबाइल, व्हाट्सएप
ये तीनों डिफरेंट मीडियम्स जो है वो किसी ना किसी शक्ल में एक्टिव होते हैं। कॉल्स भी आ रही होती हैं, ईमेल्स भी जा रही होती हैं। आप इमेजिन करें कि मैंने ट्रेवल करना था फ्राइडे को और 2 ईमेल्स मैंने हाईवे पर रुक कर की हैं जो कि अर्जेंटली मुझसे कही गई थी, और मैंने वहीं राइट गाड़ी पार्क करके वो ईमेल्स की हैं और फिर मैंने अपने सफर को कंटिन्यू रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली सिचुएशन तो हर जगह पे है। जहां तक सही। बात आती है इमोशंस की, इमोशंस देखें, इमोशंस आपने हमेशा वर्क प्लेस पे आउट नहीं करने, उनको सेंसिबली मैनेज करना। देयरफॉर जो बर्डन है वो हमेशा आएगा। अब अगला पॉइंट ये है कि क्या आपने उसको एब्जॉर्ब करना है या टीम में डेलीगेट करना है। तो उसमें हमेशा अपना जो प्रिंसिपल है वो रखें कि जो इंटेग्रिटी है, किसी को अनड्यू ना प्रेशर दें। पहली चीज, अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो आप अपनी टीम पे उस प्रेशर को डेलीगेट इस तरीके से करें कि वो इवन आउट हो जाए, ताकि जितना प्रेशर आप ले रहे हैं उतना ही आपका डाउन साइड भी ले रहा हो। आप बीइंग अ मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो सुपरवाइजरी प्रेशर होगा। वो प्रेशर ये नहीं होगा कि आप खुद ऑपरेशनल कामों में इन्वॉल्व होंगे। आपका जो प्रेशर है वो होगा जवाबदेही का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि आंसरेबल आप है। आपकी टीम से नहीं पूछा जाना, आपसे पूछा जाना है। आपका जो प्रेशर है वो मेंटल प्रेशर होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी आपने डेलीगेट करना सीखना है कि आप अपनी टीम को किस तरह से डेलीगेट करें कि आप ऑपरेशनली कम इन्वॉल्व हो, सुपरवाइजरी रोल में ज्यादा रहें, और आपकी जिम्मेदारी, आपका प्रेशर रिस्पॉन्डिंग टू द सीनियर मैनेजमेंट क्यूरीज होना चाहिए। और ईपीएसएम के अंदर जो पर्सनल इफेक्टिवनेस का मॉड्यूल है वो आपको इसमें हेल्प करेगा हाउ यू कैन बी मोर इफेक्टिव। बट एट द सेम टाइम दैट डज नॉट मीन कि काम कम होगा, काम हमेशा ज्यादा होगा। नेस्ले का चीफ एग्जीक्यूटिव, आपका नहीं मुझे पता, जो प्रीवियस चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसके मुतालिक आई केम टू नो अबाउट अ वेरी सीनियर इंडिविजुअल इन नेस्ले पाकिस्तान, जो स्विट्जरलैंड में बैठता है, नेस्ले का ग्लोबल सीईओ। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि वो सुबह 8:30 ऑफिस आता था और वो रात को 9 ऑफिस छोड़ता था। और इस दौरान उसके पास प्राइवेट जेट था जो कि हर वक्त स्टैंड बाय पे होता था। उसको कहीं पर भी अगर इमरजेंसी जाना है, हर वक्त उसकी मीटिंग्स प्लान होती थी। साल में वो सिर्फ 15 छुट्टियां लेता था और उसके अलावा सारा टाइम वो ऑन द रन होता था, जस्ट टू मेक श्योर कि नेस्ले का बिग शिप कीप्स ऑन फ्लोटिंग एंड कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग। ये नेस्ले का ग्लोबल सीईओ था जिसकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से तनख्वाह थी, जिसको ये नहीं पता था, टेंशन थी कि उसने बिल कब भरना है, बच्चों की फीस कब देनी है। उसका काम सिर्फ उस नेस्ले को मैनेज करने में होता था। सो ये मैं आपको उस इंडिविजुअल की बात बता रहा हूँ जो कि एक हाईली पेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इंडिविजुअल है। एंड द सेम अप्लाइज टू एवरीबडी, आप जिससे भी मिलेंगे। सो देयरफॉर काम का प्रेशर आपका पाकिस्तान में भी वैसे ही होगा, आप दुनिया में जहां भी चले जाएंगे वैसे ही होगा। इफ यू वांट टू बी पेड मोर यू विल ऑलवेज हैव टू वर्क मोर। सर बट पेड मोर वाला तो क्वेश्चन वो फिर आ जाता है कि आप ट्रेनी भी जब जॉब स्टार्ट करते हैं एज अ ट्रेनी तो फ्री एवल तो ट्रेनिंग की वो आपको मिल नहीं रही होती आर्टिकल्स, और अगर मिल जाए तो वो 5,000 10,000 से स्टार्टिंग होता है। तो क्योंकि पेड वाला तो कॉन्सेप्ट। उस टाइम के ऊपर आपकी जो पे बैक है वो लर्निंग है, वो पैसे नहीं है। जब आप सर ट्रेनी हैं, ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है, बट अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सुपरवाइजरी लेवल पे हूँ, एएम लेवल पे हूँ, मेरे साथ एक दो ट्रेनीज होते हैं, तो मैं टैक्सेशन को और मैनेज कितना कर रहा अरसा हूँ। हुआ आपको, कितना अरसा हुआ सर आपको? मुझे मुझे अब 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को। और तो फिर आप ये देखें ना कि आपने 3 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद 1 साल के अंदर ही आप एएम लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आप इसको कम ग्रोथ कंसिडर करते हैं? सर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट तो मैं कम ही समझता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टैक्सेशन को सीखा, जीरो से स्टार्ट किया, इवन दो कि मुझे पाकिस्तान की टैक्सेशन का कुछ भी नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब। अब ऑब्वियसली वो जो लर्निंग है वो इन टाइम्स टू कम, इन नियर फ्यूचर आपकी कैश इन होगी जब आप स्विच करेंगे, जब आप नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, अगर आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके ड्रीम में सपोर्ट नहीं कर रही है, देयर ऑलवेज इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच। बहरहाल मैं बाकी कमेंट्स की तरफ जाना चाहूंगा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। श्योर सर, थैंक यू, जजाकल्ला, आपने प्रैक्टिकली नहीं, मोटिवेट। आपका ये, ओके, जजाकल्ला सर, थैंक यू। थैंक यू। बट व्हाट इफ दैट प्रोजेक्ट इज नॉट व्हाट्स गुड फॉर द कंपनी? सो वर्दा इन इस सारी सिचुएशन के अंदर
you always make your point home through facts and figures and not through emotional outburst and being aggressive. Nobody is saying that accept everything. Emotional intelligence का मतलब yes man होना बिल्कुल नहीं है, but हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स और ऑब्जेक्टिविटी जो है प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल है, वो आपको यही गाइड करता है कि यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव while arguing on a certain project or a matter. All right. All right. Dureshawar says going for job interview and taking half day off but telling reasons that are not true. Is this also an ethical dilemma? Well, this is not an ethical dilemma. This is an, clear-cut unethical decision that you have taken. Whenever you are not stating the truth, that is an unethical situation. If you are going for a job interview and you are telling that you have work at home, that means you are not stating the truth. But again, at the end of the day, uh, it is also important that you do not have to divulge everything that you do. So, for example, you can say, I have a personal commitment. I mean, don't create another reason that you are not well, that you are ill, that your family member is ill. Just mention that you have a personal commitment to attend to, and therefore you would not be able to attend office for the rest of the day. Because obviously, it is not a wise practice to let people know that you are going for another interview, because it is not going to help you. You need to be practical, and there is nothing unethical about it. You will say, I have a personal commitment to attend to, and obviously if somebody goes into further detail and asks what that personal commitment is, then obviously there can be a challenge for you, that either to divulge the true nature of your personal commitment or to remain silent. On that, my advice is always that try to create a personality aura that people don't go into this much detail with you. When you are trusted and you say you have a personal commitment to attend to, people will never ask a second question. But if in the past you have been creating excuses like you used to do in the classroom के मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, और पानी खड़ा हुआ था इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, if you have that kind of habit in you somewhere, तो फिर क्या होगा कि फिर आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो पहले ही एरोड हो चुका होगा, and people then will probe further. Otherwise, if you have been able to reflect your personality in a certain way and people trust you, only saying that you have a personal commitment to attend to will get you the required day off for the rest of the day, and you would not need to speak a lie, tell a lie on that. All right, so let's move forward and talk about the remaining areas and then wrap it up. So in EPSM, the skills that you are going to learn are technical skills and ethical skills. You are going to learn what intelligence is, how to apply knowledge, how to apply reasoning, how to solve problems, how to go out of the box. You would learn how to be creative, how to create different solutions for the same situations, and that is your uniqueness. What employers would really like to see you, they would like to see you creative. They would not like to hear from you the same answers as the predecessors have been telling them, that this is something we can do. So to increase revenue, there are always different options. If you will say to increase revenue, reduce the cost, to increase revenue, increase the price, that is not going to help you. Always be creative. How, for example, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के मुतालिक क्वेश्चन होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है और कैसे इंप्रूव होगी, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं. सिर्फ रेडीमेड जो आपके माइंड में चीज है कि प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए या कॉस्ट कम करनी पड़ती है और रेवेन्यू बढ़ाना पड़ता है, ये तो कॉमन चीज है. अब कॉस्ट कम करने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेडिशनल सजेशंस होती हैं. रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आप कहते हैं जी प्राइस बढ़ा दें, ये एक बड़ी ट्रेडिशनल सी सजेशन है. लेकिन प्राइस बढ़ाने का इम्पैक्ट क्या होगा वॉल्यूम के ऊपर, प्राइस बढ़ाने का इम्पैक्ट ब्रांड परसेप्शन पे क्या होगा, वो चीजें ओवरलुक कर देता है अकाउंटेंट.
मिसाल के तौर पे ब्रांड परसेप्शन, अकाउंटेंट समझते ही नहीं है कि ब्रांड परसेप्शन उनका सब्जेक्ट है, उनको लगता है ब्रांड परसेप्शन मार्केटियर का सब्जेक्ट है। लेकिन जब वो ये सजेशन दे रहे होते हैं कि आप प्राइस पॉइंट इंक्रीज कर दें, तो वो ये रियलाइज नहीं करते कि प्राइस पॉइंट इंक्रीज करने से ब्रांड परसेप्शन अफेक्ट होती है। सिमिलरली कॉस्ट रिड्यूस कर दें, कॉस्ट रिड्यूस करने से क्वालिटी गिरती है हमेशा। सो ऑब्वियसली कोई भी अपनी क्वालिटी को नहीं गिराना चाहेगा और अगेन अपनी ब्रांड परसेप्शन को हिट नहीं करना चाहेगा। सो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को समझ होनी चाहिए पूरे बिजनेस मॉडल की, कहाँ पे बिजनेस मॉडल को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कहाँ पे उसको री इंजीनियर किया जा सकता है, कहाँ पे एक सर्टन प्रोसेस नॉन वैल्यू एडेड है उसको रिमूव अगर कर भी दें तो ब्रांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसीलिए जो अब टीम्स का स्ट्रक्चर है मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रो कर रही हैं, वो अडॉप्ट की टीम का स्ट्रक्चर इसलिए करती हैं कि मुख्तलिफ फंक्शनल बैकग्राउंड के लोग एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं और इन चीजों को वर्कआउट करते हैं कि अगर हम प्राइस पॉइंट इंक्रीज करते हैं तो ब्रांड पे क्या इम्पैक्ट है, क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट है, वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट है, मुस्तकबिल के अंदर हमारी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट है, हर चीज को समझा जाता है हर पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली अगर कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो कॉस्ट रिड्यूस करने का तरीका एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, लेकिन वो क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देगा। कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम री इंजीनियर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट करके क्या हम एक कैपिटल आउटफ्लो करके अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को नीचे लेकर आ सकते हैं। सो ये वो तमाम एंगल्स हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री, सेक्टर, इकोनॉमिक सिचुएशन, अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस इंटेलिजेंस वो नहीं रखता ये वाली इंटेलिजेंस, तो उसकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब्ड है। सो क्रिएटिविटी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है वो आपकी इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस आती है रीड करने से, इंटेलिजेंस आती है डिस्कस करने से। हमेशा अपनी आदत बनाएं कि जो आपके सीनियर्स हों ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, उनसे डिस्कस करें डिफरेंट कॉर्पोरेट इश्यूज पर अगर वो कॉर्पोरेट लाइफ में है। इसी तरह टेड टॉक्स हैं, इसी तरह बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को लर्न कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उससे आपकी इंटेलिजेंस एक्सपैंड होती है। जब आपकी इंटेलिजेंस एक्सपैंड होती है तो आपके का जो रूम फॉर क्रिएटिविटी है वो बेहतर होता चला जाता है। क्रिएटिविटी में एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आप ईपीएसएम के अंदर करेंगे वो लेटरल वर्सेस लीनियर थिंकिंग के बारे में, और वो बहुत मजे की एक्सरसाइज आपको लगेगी कि किस तरह से हम डिजाइन किए गए हैं, ग्रूम किए गए हैं टू थिंक इन लीनियर वेज। हाउएवर क्रिएटिव इंसान हमेशा लीनियरली या स्टेप बाय स्टेप नहीं सोचता, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको लेटरल थिंकिंग पे जाना पड़ता है। सो लेटरल थिंकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिजाइन थिंकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ईपीएसएम के अंदर डिस्कस हो रहा होगा जो आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे क्रिएटिवली सोच सकते हैं। फिर आपको डिजिटल अवेयरनेस मिल रही होगी इसके अंदर, डेटा, टेक्नोलॉजी, ये किस तरह से स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट कर रहे हैं। इमोशनल क्वोशंट की बात हमने बड़ी डिटेल से की, इसके अंदर आपको कंप्लीट हेल्प मिल रही होगी। विजन आप अपना कैसे ब्रॉड कर सकते हैं। जो लोग ग्रो करते हैं, जो लोग स्टैंड आउट करते हैं, उनका एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनका विजन होता है। दे आर द वंस हु आर एबल टू लुक बियॉन्ड द होराइजन, they are the ones who can think about 10-20 years in the future. यूजुअली हम लोग अगले 5 महीने, अगले 1 महीने, अगले 1 हफ्ते, अगले 10 दिन, अगले 6 महीने मैक्सिमम का सोच पाते हैं। बट पीपल हु गो, हु स्टैंड आउट एंड हु प्रोग्रेस, उनकी जो एक हमेशा कॉमन क्वालिटी होती है, दे हैव अ विजन। विजन कैसे क्रिएट होता है? अगेन जब आपकी इंटेलिजेंस एक्सपैंड करती है। जितनी ज्यादा आपका आईक्यू एक्सपैंड करेगा, जितना आपका ईक्यू एक्सपैंड करेगा, उतना आपका वीक्यू एक्सपैंड होगा। क्योंकि विजन हमेशा आपको इंटेलिजेंस और लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बेहतर होता है। बिकॉज लोग प्लेयर्स होते हैं और उन प्लेयर्स के प्ले से डेटा जनरेट होता है। डेटा और इंफॉर्मेशन को आप इंटेलिजेंस एक्सपैंड करने के लिए बढ़ाते हैं और लोगों को अंडरस्टैंड आप करते हैं थ्रू देयर प्लेइंग अप्रोचेस। एक जो स्टॉक मार्केट का फोरकास्ट करने वाला सीएफए या फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो उसका विजन बढ़ता ही इस चीज से है कि एक वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, डिफरेंट इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, चीजें कैसे इंटीग्रेट हैं आपस के अंदर। सो ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है तो पाकिस्तान की रिलेटेड चीजें ही उसको अफेक्ट कर रही हैं। उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कहाँ जा रही हैं,
आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की क्या पेशन गोइयां थिंक टैंक कर रहे हैं। अब ये सब आर्टिकल्स हैं, ये सब फाइनेंशियल प्रेस है, लेकिन होता ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट इन चीज़ों को कंसल्ट नहीं करते। वो सिर्फ अपना पेपर पास करते हैं, उसकी बुक पढ़ते हैं, उसकी किट पढ़ते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। इवन जो आर्टिकल एसीसीए प्रोड्यूस करता है, इवन जो रिपोर्ट्स एसीसीए प्रोड्यूस करता है, उसको भी नहीं गो थ्रू करते। देयरफॉर उनका जो विजन है वो बहुत लिमिटेड होता है। उनको सिर्फ वो एग्जांपल्स और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस याद होते हैं जो उन्होंने एग्जाम पास करने के लिए किए होते हैं, उससे आगे की बात उनको नहीं पता होती है। और जो इस चीज को करता है उसका विजन हमेशा स्टूडेंट के लेवल पे ही ब्रॉड होता है। फिर आखिरी चीज एक्सपीरियंस। आपने अपने एक्सपीरियंस क्वोशंट को इम्प्रूव करना है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनकी आपने रिफ्लेक्शन को बढ़ाना है। हर एक्सपीरियंस से आपने लर्न करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, एनालाइज करना है, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि क्या चीजें थी जो आपने ठीक की हैं, क्या चीजें थी जो आपने गलत की हैं। और ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज आपको एक जगह पे ले जाती है जहां पे एक मैकेनिज्म आप बना लेते हैं कि हर एक्सपीरियंस आपके विजन को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके इमोशनल कोशंट को इम्प्रूव करता चला जाता है। तो ये सारी स्किल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंड देयरफॉर जो ईपीएसएम का मॉड्यूल है, डिफरेंट सिचुएशंस में ले जाकर ये स्किल्स आपको हेल्प कराएगा कि किस तरह से आपने इनको इम्प्रूव करना है। I have a question related to remote CBE. Okay, I come to that, Mohammed Saqib, in some time to come. ACC educate these topics to students. All right. So what is your takeaway? Your takeaway from this is कि आपको हर मॉड्यूल का एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा जो आप अपने क्रेडेंशियल्स में रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। जब आप इसकी असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो यू विल हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ सक्सेस, जो आप जो है वो अपने अगेन क्रेडेंशियल्स में रख सकते हैं। और उसके अंदर आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये एक मेरा हॉल ऑफ फेम है, कि मैंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किया हुआ है एंड आई एम अ प्रोफेशनली ग्रूम्ड इंडिविजुअल. So that's about it. We have talked at length on the EPSM. Let me quickly recap. दो अहम तरीन चीजें हैं ये जो आपको देगा ये मॉड्यूल, एथिक्स और प्रोफेशनल स्किल्स। और ये दोनों चीजें आपके ट्रस्ट वर्दीनेस के स्केल को इम्प्रूव करेंगी। और ये मैं बात बड़ी डिटेल के साथ कर चुका हूं कि ट्रस्ट वर्दीनेस इज अ सिंगल मोस्ट डिफाइनिंग फैक्टर इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। अगर आप ट्रस्ट वर्दी हैं, अगर आपका ब्रांड ट्रस्ट वर्दी है, people will come to you. If you are not trustworthy, people will not come to you, no matter how good you are, how good you look, how good you present yourself, how good you talk, no matter whatever you do. If the trust is missing, obviously nothing is going to help you. And this EPSM module is all about how you as an ACC affiliate and student can improve your trustworthiness among the people within corporate life, within professional life. And I'm sure there will be no one who would not be interested in being more trustworthy, than anybody else. Because obviously, the more trustworthy you are, the more successful you are. So thank you very much for being patient. One task that I will give you, and there is no need to report back on that task, but that task is a peer review exercise. So all of you who has not done this exercise in the past, as few responses were coming in, I would highly encourage and urge you to try this peer review activity on the emotional intelligence side and try to know yourself better so that you are able to discover yourself. Thank you very much. And now any questions, the last questions, if you may have, please shoot them. All right. I think companies need to arrange emotional events at the morning. All right. So Murtaza is always thinking negative about everything. That is not going to help anybody. Thank you, Dureshawar. Thank you, Saqib. Performance measure करनी होगी, critical success factors और KPIs को review करना होगा, whether they are aligned with the overall strategy or not. Exactly, Mohsin. ACC educates these topics to students. New market development. I have a question related to remote. So tell me the question, Mohammed Saqib. What question do you have with remote CBE in September?
It's one of the best session of 6-digit program. Thank you, Sumaira. Will EPSM help in improving efficiency? Bilal Rana. Definitely it would. Personal effectiveness का जो पूरा यूनिट है वो है ही इस पे वर्क एफिशिएंसी के ऊपर. One question about EPSM: Are there any charges or it's free for students? There are 65 pound charges for students. Usman Khalid. I am having sound issues. Faik. I hope they are now good. No voice. Aisha Yaqub. Please refresh your login, your page. Sorry if I'm repeating question as I was able to attend last two sessions. No problem. Thank you. Great session. Thank you, Anam. Uh, interprets which activity to do. Interpret what, Sumera? Please tell me again what you want me to interpret. Great session. Thank you, Mohammed Rafi. Great session, Aisha Yaqub. Great session, Mubin Akhtar. Good session. Thank you. Mohammed Saqib. Okay. I also have a question related to CB exam. Do we have an option to do the annotation on the exam? Yes, you would have a scratch pad and you would have the annotation options as well. Thank you, Amir. If you could unmute Saqib, Mohammed Saqib Mutahid, he would like to talk. Areeb Kiani, thank you. Mohammed Azim, thank you. Thank you so much for delivering such a valuable session. Thank you, Arshia. Thank you, Nimra. Thank you, Muhammad Azim. The activity Sumaira Khalid I was talking about is that peer review. Go to the close people, go to the people who are close to you and ask them to tell you about yourself. What are your triggers? What makes you angry? What makes you laugh? What are the things that you are good at? What are the things that you are bad at as a person, not as a professional? So try to learn yourself through the lens of somebody else. Thank you, Abid Ali. Any fee for associate or members on the no? For members who have already become members prior to this module, new module was in place. For those, it is free because they have already paid the cost of 2 papers, and therefore this is going to be free for them. Great session. Thank you, Javeria. Good session. Thank you, Varda. Do we have to document it? What Hola? What are you talking about? What? No. Okay, peer review. No, there is no need to document it. I'm not asking for any feedback, written feedback from your side. This is just to give you an idea that somebody who is really close to you, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना उसको कहें ब्लंड हो जाए. जिस तरह मैंने आज से 15 साल पहले एक सवाल अपने एक बहुत करीबी दोस्त से पूछा था कि be bluntly honest and tell me who I am. What do I do good and what do I do bad? You know me from 7 years. So such conversations always help. लेकिन एक चीज इसमें हमेशा याद रखें, आपको उसको एक certain comfort zone देना पड़ेगा कि वो blunt हो सके. Because अगर आपकी personality ऐसी है ना कि आप फौरन react करेंगे, कि अगर वो कोई ऐसी बात करेगा जो कि उसको लगता है कि आप में है और आप रिएक्ट करेंगे तो फिर वो आपको नहीं बताएगा. तो पहले आपको उस इंडिविजुअल को चूज करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि वो आपको ब्लंट एडवाइस दे पाएगा जो कि एक कटिंग नाइफ एज ही क्यों ना हो, जो आपको कट थ्रोट जो है वो फील दे. बट देन यू हैव टू स्टैंड दैट क्रिटिसिज्म और दैट फीडबैक जो वो आपको दे रहा है. Annotation like a pencil tool नहीं होगी. It means we can only highlight, cut, paste and strike through. Sorry for disturbing. No problem, Javeria. जी बिल्कुल ऐसे ही होगा. Cut, paste, highlight, strike through की option होगी. Muhammad Tayyib, this is my first webinar on 6-digit and this is very fruitful. Inshallah, will participate in the remaining. Thank you, Tayyib. Good luck with the remaining sessions. One thing I would like to ask regarding ethical issue is while on internship, if your immediate colleague who is not very senior steals something like garments from the garment factory, should we report to our manager if we don't have any evidence? Should we report to our manager if we don't have any evidence? Would our manager believe us? Well, इस केस के अंदर बिलावल राना 2-3 चीजें हैं. पहली चीज तो ये है कि अगर आप कुछ भी अनएथिकल होता देखते हैं
तो एज अ प्रोफेशनल यू हैव अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट टू द राइट इंडिविजुअल, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास उसका एविडेंस नहीं है तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। और बीइंग एन अकाउंटेंट आपको ये भी पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, के जो चीज प्रूफ नहीं की जा सकती वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको ये कहा जा सकता है कि आपका कोई प्रॉबेबली पर्सनालिटी क्लैश है उस इंडिविजुअल के साथ, इस वजह से शायद आप उसको बुरा दिखाना चाह रहे हैं। सो इसका बेहतर हल ये है कि अगर आपने उसको स्पॉट कर लिया है तो आप उसको खुद को अप्रोच करें, उस इंडिविजुअल को अप्रोच करें और उसको एडवाइस करें कि आई सॉ यू एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, सो यू शुड बी एथिकल ऑलवेज। सो पहला काम आपका ये है कि आप उसको खुद समझाएं। अगर वो कोई बहुत बड़ा ऐसा जुर्म या एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आप उसको बताएं, उसको अप्रोच करें और उसको गाइड करें, उसको एडवाइस करें कि ये एक अनएथिकल चीज है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन you. However, you can also say anonymously to people who are in charge of security, kindly keep a lookout. I feel that there are people who probably have uh, get into this particular building at an unauthorized time, and therefore you need to be more careful. But obviously as an attorney आपको बहुत careful रहना है, आपको उतनी बात करनी है जितना आपका sphere of influence है। आपको वो नहीं करना कि आप जो है वो एक कंप्लेनेंट बन जाए फौरन से पहले और आपका कंट्रोल भी नहीं है उसकी चीज के ऊपर। सो इसलिए हमेशा उस चीज को इन्फ्लुएंस करें जिसके ऊपर आपका एक सर्टेन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। जहां पे आपका कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे आप फिर सिर्फ वो करें जो आपके कंट्रोल में है, और आपके कंट्रोल में उस इंडिविजुअल को अप्रोच करके गाइड करना है कि दिस इज नॉट द गुड थिंग दैट यू हैव डन, आई हैपन टू सी इट एंड आई वुड एडवाइज यू नॉट टू डू इट अगेन। बट उसके बावजूद भी अगर वो इट डज नॉट हेल्प, so then what you can do is that you can tell the security in charge and the people who are in security that they need to be more conscious without divulging the name, because you don't have any evidence to prove unless there is a CCTV footage and you are confident about that happening will be recorded on the CCTV, then you can report it. There is no harm. It will always be a good idea. All right, sir, can we become ethical by taking different courses like EPSM? Ji, definitely courses always help, Danial, courses always help. But what helps at the utmost is your conscious effort and your strength to stand by the right. To stand by the right is always the work of the courageous. Cowardice never helps you to stand with the right. This is something, a universal truth. So develop a courage in yourself, because there are always consequences to stand with the right. But they are not bad consequences, they are always good consequences. But in the meantime, you have to be brave to take the pressure. Thank you, Bilawal. Muhammad Saqib, Mutahid, if you could unmute Muhammad Saqib, he wanted to speak. Hassan, I'm unmuted. Oh, thank you. Yep, please go ahead. मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से हम प्रीवियसली पेपर बेस्ड एग्जाम में ये था कि हम एक्सपो सेंटर या किसी एग्जाम सेंटर जाते हैं तो 2 बजे हमारा एग्जाम टाइमिंग है, तो हम 1 बजे नमाज पढ़ के और पहुंच जाते हैं। तो इस दफ़ा जो एग्जाम टाइमिंग है वो 12:30 बजे का आ रहा है सीबी। तो मुझे ये पूछना था कि क्या मतलब हमें कोई रेस्ट टाइम, जैसा कि वहाँ पे लिखा भी था कि 5 मिनट का मिलेगा ड्यूरिंग द मतलब जब सेशन रन हो जाएगा, और मेरे ख्याल से शायद अच्छा इसके अलावा ये कि इसके एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये कि चूंकि आप जानते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अपने घरों से दे रहे होंगे, तो मैं भी अपने घर से ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मतलब एक तो ये कि मैं अपना रूम लॉक करके घर में बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन ये कि जो अजान की टाइमिंग्स होंगे उसमें अजान की आवाज़ आ रही होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉक्टर जिसको जो कि मेरे माइक के थ्रू जिसको आवाज़ आ रही होगी, तो वो इस चीज़ को किस तरह से लेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरफेरेंस अज्यूम करेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? जी, मैं बता देता हूँ। पहले सवाल के केस में तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। 5 मिनट की कंफर्ट ब्रेक है, वो आप नमाज के लिए यूज करना चाहें, इफ यू कैन डू दैट क्विकली, या आप उसको रेस्ट रूम के लिए यूज करना चाहें, वो आपकी कॉल है। लेकिन 5 मिनट की एक कंफर्ट ब्रेक है,
जो ड्यूरिंग द सेशन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, जहाँ तक बैकग्राउंड वॉइसेस का ताल्लुक है, तो अगर अजान की आवाज आती है या किसी हॉकर की आवाज आती है जो गली से गुजर रहा है, अक्सर औकात हमारे नेबरहुड्स के अंदर, हमारे बैकयार्ड्स के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं। सो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि वो वॉइस और या वो नॉइज इतनी हो जो कि एक मतलब उस प्रॉक्टर को इतनी ज्यादा ना पहुंचे कि वो डिस्टर्ब हो जाए कि ये क्या हो रहा है। और ऑब्वियसली वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है अगर मस्जिद आपके नेबरहुड में है तो वो क्यों फ्यू यार्ड्स अवे होगी। अगर आपके बैकयार्ड में कोई बच्चे खेल रहे हैं तो आप अपना जो विंडो का स्लाइडिंग डोर है वो बंद कर सकते हैं। सो आपने मैनेजेबल रखना है बैकग्राउंड नॉइज को, वॉइस को, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा हो। अदरवाइज अगर वो अजान की आवाज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अलर्ट होता है या सॉफ्टवेयर अलर्ट होता है उस अब्रप्ट साउंड से, तो आप उसको बता सकते हैं कि this is call to prayer and the mosque is very close to my home, nothing to worry about, it will end in 5 minutes or 2 minutes, so they will understand it. As long as आपके बैकग्राउंड में कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर रहा, तो it isn't going to make a big difference. ठीक, थैंक यू, ग्रेट No सेशन। problem. Thank you very much. Can we use mobile hotspot? Mobile hotspot, Anam, is not recommended because mobile hotspot is uncertain. जैसे ही कोई कॉल आती है तो वो उसके ऊपर डेटा अफेक्ट होता है, तो इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। 5 मिनट्स की ब्रेक होगी बट टाइम कंटिन्यू रहेगा। नहीं, 5 मिनट्स की आपकी जो वो 5 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। एग्जाम का टाइम 3 घंटे है, तो वो 5 मिनट इस 3 घंटे में से ही माइनस हो रहे होंगे। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू ईपीएसएम? मुतहिद, मैं चाहूंगा कि आप, एक क्वेश्चन था कि वो जो स्टोरी है वो कहाँ पे अपलोड करनी है, अगर आप क्विकली अनम्यूट करके बता दें तमाम उन स्टूडेंट्स एफिलिएट्स को जो सुन रहे हैं। अगर कोई उस स्टोरी को लिखना चाहता है तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने उसको लिखकर आपके साथ कैसे शेयर करना है। जी मुतहिद, आपको आवाज आ रही है? Yes, Hassan, thank you so मुतहिद, much कैन for यू the हियर मी? session. Yes, Hassan, I can hear you. Can you hear me? Hello, जी जी, आई कैन हियर can यू you नाउ। hear me? Okay. Thank you, Hassan. जी जी, नाउ हारून आई साहब कैन। की कॉल थी। यस। अच्छा, एथिकल डिलेमा जो इन्होंने सबमिशन के लिए, मैंने इनको एक लिंक भेज दी है व्हाट्सएप पे। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है, एंड दे कैन सबमिट देयर any document they want to submit. I बिल्कुल ठीक also है, shared थैंक यू। in the session, in the chat box as well. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। So guys, you have the link. If anyone wants to submit, it will reach to me through Mutahid. How to connect you on the LinkedIn? I am with the name of Hassan Ashraf. You can find me there. Uh, all right. Last call for any questions. If not, then let's wrap up. Any comments? Any questions? Any clarities? All right. So thank you very much for being patient. It was lovely to speak with you in all these 3 sessions. I wish you all best of luck for your endeavors, for your dreams. Keep growing, stay positive. That is the most important thing. Stay positive. Never get into the abyss of negativity. There are 1,000 reasons to become negative, but there are 10,000 reasons to become positive. Even we wake up early in the morning, healthy, fresh. This is a one big reason to become positive. Ask those who are unfortunately not healthy. Ask them how is it like to sleep at night. So that's why
10,000 रीजन हैं हमारे पास पॉजिटिव रहने के, अगर 1,000 रीजन हैं हमारे पास नेगेटिव होने के। सो हमेशा पॉजिटिव साइड को प्रेफर करें, पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में आएगी, आपके इर्द गिर्द भी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओवर टू यू मुतहिद, एनी लास्ट वर्ड्स? If Harun Saab is around, otherwise let's close it. Thank you, Hassan. I think Harun Saab is not in the session right now, and let's wrap up the session. All right. Thank you very much. Thank you. Take care. My pleasure. Thank you. My Allah pleasure. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.